Good morning, Jai Hind children. It's 8 o'clock. Oh, weather is changing. You are feeling cold little nowadays. But wake up early in the morning. You should go to bed at time and wake up early in the morning. Okay, children, let's start today's science class. Children, we will start something new today. We will learn the life skills things in this topic. Children, your father wear when he goes outside through bike, what he wears helmet. वो helmet पे लगाते हैं क्यों? To protect, safety के लिए. किस लिए? For safety. And we make a house. Why we make a house? For our safety. So today's topic is safety at home, and to live in home with safety is also very very important. Now, I am going to tell you some very important rules, some important things which are small but can cause a damage if you will become careless. So, we should be very, very careful for these things. Let me show you book pages. I am going to share the book pages. This is the lesson number 9, Safety and Home. Safety rule. What we will read in this lesson? Safety rules at home, safety rules at school, on the road, and in the playground. Everywhere we should take care of some rules. Otherwise, we can get harm. We can get accident. We can get harm. To avoid the accident and to become safe, it is very, very important to follow the simple safety rules. And there are another topic, first aid measure to be taken in case of burn, cuts, animal bites, and how keep our house comfortable, safe, clean. These we will learn on the other day. Today we will cover the topic safety rules at home. Let's read one by one, beta. Yes, children, these are the things, this is the picture of some things which you should not touch. Put a tick against the thing you should not play with. किस किस चीजों से नहीं खेलना चाहिए बेटा? You should not play with knife. It is very sharp. It can harm on you. ना इससे आपको चोट लग सकती है ना, it harm कर सकता है ना. And this candle, never play with this candle. This wax is very hot and it can catch fire ना. Always be, अभी दिवाली आने वाली है ना, you will not go near these things, firecrackers, and be safe. And the ups and the something which is boiling, or when your mother is cooking on the gas stove, you should not go and play with these things. For teddy bear, with teddy bear, of course you can play. You should not play with the thing shown in picture 1, 3 and 4. 1 and 3 and 4 में क्या picture है? 1 is knife, 3 is candle, 4 is burning. So something is cooking in this pan. We should not touch these. These things are not safe to play with. इन तीनों चीजों से हमें play नहीं करना चाहिए. You may hurt yourself if you play with them. Being safe means avoiding danger and not getting hurt. किससे सेफ होने का मतलब क्या होता है बेटा? What is the meaning of being safe? To avoid dangers, खतरे को से बचना, and not getting hurt, और खुद को चोट लगने से बचाना. Not getting hurt, किसी चीज से hurt होने से बचना. We can remain safe by following safety rule always, everywhere. हर जगह, हर समय we should follow the safety rules. Nowadays, Diwali is coming. You should not fire crackers. You may get hurt. आपको burn हो सकता है ना? And it causes air pollution also. These are the safety measures we should follow. आपके घर में elderly people हैं, they can, उनको irritation होता है voice से, and so we should not do such type of work. Yeah. Now we will talk about some safety rules at home. Stay away from the fire and hot objects. हमको गर्म चीजों से और
फायर से, आग से दूर रहना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक एंड बर्निंग कैंडल. मैच स्टिक से कभी नहीं प्ले करना चाहिए या बर्निंग कैंडल से. डू नॉट टच आयरन. जब कभी घर में प्रेस हो रहा हो, नेवर टच एनी आयरन, यू कैन गेट करंट. ये दो तरीके से आपको नुकसान करेगा. इट कैन हर्ट यू बाय टू वेज. First, iron is hot as well as there is electric wire. You can get current. Cooking vessels when you are not sure whether they are hot or cold. घर में pressure cooker, the pans, these things you should not touch. Dip a finger in hot bath water before pouring it on yourself. Nowadays, the winter is coming. You're in your bathroom, there are geysers. Your parent arrange hot water for you, but don't put on your body before touching it. को बहुत गर्म पानी अपने ऊपर कभी भी मत डाल लेना. Check out how hot your food is. Many times you don't care, you are in hurry and you eat very hot food. Before putting it into mouth, you should check these are the common things, very common things, but we should take care. Stay away from fire and hot object, as I have earlier told you. इनसे बच्चों को दूर रहना चाहिए. And inform your elders if you smell something burning. आपको कोई चीज जलने की महक आती है तो आप अपने एडल्ट को बुलाओगे. मे बी इलेक्ट्रिक वॉयल जल रहा हो, वो शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, आग लग जाए. सो वी शुड बी केयरफुल. Stay away from sharp and pointed objects such as blades, knives, scissors. इन सबको नहीं टच करना चाहिए. Do not play with sharp toys. Bow and arrow वाले जो गेम्स होते हैं, टॉयज होते हैं, pointed toys. The bullets of the toy gun. Some of the child you are playing with a gun, having bullets, arrows from the bows and darts could hurt you people around you. These things can hurt the people around you. आपके चारों ओर कोई दूसरा बच्चा हो, कोई बड़े लोग हो, किसी को लग सकता है. When the doorbell rings, do not rush to open the door. Let the elder in house to open the door. You are a smaller one. You are required to be kept safe. तो आपको क्या करना चाहिए? जब कोई डोरबेल बजे तो दौड़ के खुद से गेट नहीं खोलना चाहिए. यू शुड वेट फॉर योर एडल्ट. मे बी इन स्ट्रेंजर कम एंड इट कैन हार्म यू. कोई ऐसा इंसान आए जो आपको नुकसान पहुंचा सके. Do not play with electric wires or gadgets such as iron, toasters, microwave. इस तरीके का रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में never touch, dear. I am telling you, never touch the back of the refrigerator. कभी भी रेफ्रिजरेटर के बैक वाले पोर्शन को नहीं टच करना चाहिए. आयरन you should not touch. You should not touch gas stove. You should not touch such type of matchsticks and such type of sharp knife or these things you should never touch because you are small children. These sharp things can harm you. So always be careful to avoid any accident, any type of harm, any type of danger. You should be very, very careful. Okay? We should be very, very careful. Use scissors in the presence of an adult. आप तो पहले तो आप यूज ही नहीं किया करो. If suppose any craft item you need a scissor to cut the paper for making any craft, then take help of your mother or your elder sister or your brother. Okay? Don't do yourself alone. अकेले में कभी भी इन चीजों से नहीं करना चाहिए. And another important thing, you should keep your bags, books and shoes at the proper place. Always keep these things in proper place. Do not leave your toys scattered all over the floor. जमीन पे कभी भी ऐसे टॉय को खेल के scattered मतलब फैला करके नहीं छोड़ना चाहिए. Someone could trip over them and get hurt. मम्मा पापा कोई बहुत जल्दी में आया, आपका यंगर ब्रदर सिस्टर, वो शार्प है तो उनको चुभ सकता है, वो ट्रिप कर सकते हैं, उसके ऊपर से फिसल के गिर सकते हैं. सो ऑलवेज कीप द टॉयज, द थिंग्स इन अ सेफ प्लेस. डू नॉट क्लाइंब ऑन वॉल्स, कपबोर्ड्स, ऑन विंडोज. कभी भी कपबोर्ड वगैरह के अंदर नहीं छुपना चाहिए इन हाइड एंड सीक गेम because sometimes it can harm very serious. If you will close the door, there will be no oxygen, you won't be able to take breathe and you can cause serious injury. So
Don't do these things. Do not eat stale food. कोई बेकार का खुला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. You could fall sick. Do not touch the taste medicines. कोई भी दवा अपने मन से नहीं लेना चाहिए. हाउस होल्ड क्लीनिंग मटेरियल जैसे फेनाइल वगैरह है और इस टाइप के हार्मफुल थिंग को आपको नहीं टच करना है. बाय मिस्टेक इफ यू हैव टच, immediately go and wash your hands. And children, one of the another important thing, do not take sweets from stranger. If anyone in the रास्ते में आप कहीं जाते हो, आपको कोई स्वीट देता है, मिठाई देता है, टॉफीज देता है, चॉकलेट देता है, नेवर टेक देम फ्रॉम देम. उनसे कभी मत लेना. वो आपको किडनैप कर सकते हैं. बदले में दे कैन आस्क सम अदर फेवर टू योर पेरेंट्स. को आप परेशान कर सकते हैं ना. सो नेवर टेक सच टाइप ऑफ थिंग्स. These are the never play these fly kite on the terrace. This type के open terrace पे कभी भी नहीं. Because at that time when you are flying the kite, you are seeing up in the sky. You can cross this and you can got very serious injury. So always avoid. Never do. If anyone else is doing such type of, यदि किसी को ऐसा करते आप देखोगे तो भी आप उसको तेज से डांटोगे. बोलोगे don't do this. This is very dangerous. Okay. Let's read in detail. Do not take any medicine or your own without asking the elder or doctor. के advice के बिना कोई medicine नहीं लेना चाहिए. Do not touch electric switches, plugs and wires with wet hand. गीले हाथ से कभी भी नहीं टच करना चाहिए. You may get electric current. हमेशा प्लास्टिक की स्लीपर्स पहनने के बाद भी. You are the smaller one. आप तो छोटे हो, आपको तो टच करने की जरूरत ही नहीं है. Do not fly kites on the open terrace or burst crackers near electric poles. उसकी जो चिंगारी होती है जो निकलती है वो यदि इलेक्ट्रिक वायर्स या पोल्स में चली गई तो पूरी जगह फायर लग जाएगी. सो बी वेरी केयरफुल. डू नॉट प्ले आउटडोर गेम्स इनसाइड द हाउस. कोई भी आउटडोर गेम अंदर मत खेलिए. यू कैन हर्ट योरसेल्फ और समवन एल्स माइट यू कैन गेट हर्ट. बी केयरफुल व्हाइल वॉकिंग ऑन वेट बाथरूम. जब किसी गीले फ्लोर पे चलते हैं, समवन एल्स माइट स्लिप एंड गेट हर्ट. आप फिसल सकते हो. डू नॉट लीव टॉयज, बैग, शूज एंड अदर थिंग्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर और ऑन स्टेयरकेस. सीढ़ी पे कभी भी सीढ़ी पे कोई पेंसिल्स और कोई शार्प थिंग आप वहां नहीं छोड़ोगे. यू और समवन एल्स माइट ट्रिप ओवर. उस पर ट्रिप कर जाएंगे और उनको इंजरी हो सकती है. डू नॉट प्ले विथ कैंडल्स और मैच स्टिक. Do not go near the stove, you might get hurt. Do not play with sharp object like scissors, knife. Okay? देखो. And don't split the water bottle. आप water bottle का पानी यदि कहीं रास्ते में यहाँ पे गिरा दिया, you can slip. ये जो हमारा सोल होता है, this shoes and sandals का, this is very slippery. और आप उस पर ट्रिप कर जाओगे. Okay? So always make it dry with clothes. Ask your mother, ask the elders to make it close, or you can do yourself also. Now, never touch this type, never do such type of. Red Cross means you should not do such type of work, na? Outside home, बाहर के घर में भी क्या सेफ्टी रूल मेजर फॉलो करना चाहिए. Do not take sweets, candies, presents or rides from the stranger. अगर कोई आपके पास में आता है, बोलता है अरे चलो मेरे बाइक पे बैठो, मेरे कार में बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ राइड्स पे. यू विल नॉट गो. बोलो नो, आई विल गो माई सेल्फ. आई डोंट नो यू अंकल, आई डोंट नो यू आंट, आई कैन गो माई सेल्फ. डोंट टेक लिफ्ट. टेल योर पेरेंट्स और टीचर्स if touch of a person makes you feel uneasy. This is also very important sensitive issue. If anyone, elder, boy, male, female, anyone who touches you or you don't feel okay, आपको अच्छा नहीं लगता है, uneasy feel करते हो, immediately tell to your mother. First you go to your mother and tell that the touch of this uncle, this aunt, this bhaiya, this didi, I don't like. Okay? And learn your home address and mobile number of your parent. You must know your address and telephone number to keep yourself safe. Yes, children, in this picture, I will show you, this is the another thing. Use sharp object like knife, scissors only in the presence of elders. And one of the also very important thing we should take care. Do not hide in the cupboard. Never cover your face with polythene bag.
कभी कभी बच्चे ऐसा खेल करते हैं, यू मे गॉट सफोकेटेड, मतलब सफोकेशन हो जाएगा, आपको ब्रीदिंग ऑक्सीजन एयर नहीं मिलेगी, प्लास्टिक में से एयर पास नहीं होता है ना बेटा, और यू कैन गेट सीरियस इंजरी, आप बेहोश हो सकते हैं। सो नेवर डू एंड नेवर टच दिस इलेक्ट्रिक, कभी भी गीजर अपने आप से गीले हाथ से चलाने की कोशिश नहीं करना। नेवर टच एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंडेड hands with, you may get an electric shock. Do not play on terrace. Yes, this is an activity we will do. Read the conversation given below and make a tick which is safe situation and cross out which is unsafe. आपको क्या करना है, जो बात सही है उस पे आपको you have to put a tick, आपको उस पे टिक का मार्क लगाना होगा, ठीक है। I think you are drinking some medicine, can also taste it. Here are two boys. ये boy कहता है कि तुम कोई medicine पी रहे हो क्या, मैं भी पी लूं? No, this is false. You should not do. Never do this. The second boy is saying, this is the cross. What you will put here? You will put here cross. I always wear a helmet while skating. True, this is the right. You will put tick. आप यहाँ पे टिक करोगे, तो आप इस तरीके, when you play you can fall, to save your head you always wear a helmet while skating. And the another boy is saying, I am going to terrace to fly these balloons. So he is right or wrong? Of course he is wrong. You should not go to terrace, you may fall. You play with balloons in the ground only. We never forgot to line up while boarding in the bus. जब आप बोर्ड में लाइन, बस में बोर्डिंग के लिए आप लाइन लगाते हो, you should do or not? Yes, of course you should do. आपको ऐसा करना चाहिए. These things are right and these two activities are false. Cross, you will put cross here. Okay children, you have done this? Okay, today we have talked about the safety rules at home. बेटा you will कि मैम ने इतनी छोटी छोटी सी बातें बताई, but this is very very important. You should always take care. हमको हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए. We should take care for these things, that we should not touch any sharp object, knife और इस तरीके के मैच बॉक्सेस नहीं करना चाहिए. Nowadays the Diwali is about to come. Never play with क्रैकर्स. आप कोई भी क्रैकर्स से नहीं प्ले करोगे, आप नहीं बर्स्ट करोगे. It can cause damage and near the electric wire points you never keep these things. गैस स्टोव नहीं टच करोगे. And what thing, you should take care of others also. Don't play with sharp thing. You should not play with any sharp thing. If you are playing with bow or arrow or any sharp toys, it can harm you or your elders. And always play outdoor games outside. हमेशा जो आउटडोर गेम्स होते हैं उनको बाहर की तरफ. सपोज यू आर प्लेइंग बैडमिंटन inside your hall, and when you will push it, तो what will happen, आपको पीछे का तो दिख नहीं रहा है. If someone is standing at the back, उसके आंखों में, उसके हेड पे लग सकता है. Many of you have remember also, जब हम कभी सारनाथ पिकनिक पे जाते हैं खेलने के लिए, तो I asked you not to play with these things. आपको इस तरीके से इन चीजों के साथ खेलने के लिए हम लोग मना करते हैं. Always take care कि there is anybody, कोई हमारे पास में तो नहीं खड़ा है. We should take care. और आप जब बैट बॉल खेलते हो, when you do the batting, जब आप बैटिंग करते हो, at that time you should also take care कि हमारे बैट से किसी को चोट तो नहीं लग रही है. So we should be very very careful. These are the safety rules, that when you play outside, all outside games you should play outside. Never take anything from any strangers. से आप कोई चीज नहीं, किसी स्ट्रेंजर से कुछ भी नहीं लोगे. एनी डबल थिंग नहीं लोगे. इफ एनीवन गिव्स यू लिफ्ट, आपको कोई लिफ्ट देता है, कम विद मी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, नो यू विल नॉट टेक लिफ्ट. एंड इफ यू फील एनीबॉडी टचिंग, आपको किसी का टच अच्छा नहीं लगता है,
Immediately tell your mother, I don't like he is touching me. Okay? These are the simple thing, but you should be very, very careful of. We are elder ना, we think about your safety. हम आपके safety और protection के बारे में सोचते हैं. So I am your teacher. So I am telling you these things, children. Your mother is also telling these things ना. आपके mother, grandfather, दादी ये सब कुछ बताते हैं ना आपको, नानी दादी सब लोग बोलते हैं ना कि be safe. Okay? I will say bye bye, be safe. Nowadays, what safety rules we are following? We are suffering from coronavirus. The safety rule is wash your hand after touching anything with Dettol or any other soap, or you sanitize your hand, and always wear a mask when you are going outside. Don't go outside if it is very, very necessary. Then only you can go with your parent, with the permission of your parent, and you wear mask. These are the safety rules. जो mask पहनते हैं, hand sanitize we are doing, these all are the safety rules. Children, what is today's work? You read the lesson again and again. This is not the thing to read and write actually. This is the thing to learn. आप by heart जो आज मैंने बताया है वो सारी बातें learn करोगे. And if someone else is going to do such type of mistake, you will stop him or her also. आप उसको ऐसा कुछ करने से रोकोगे भी. Okay, children. Meet you soon in the next class. Bye bye. Be safe. Take care and follow all safety rules. Meet you soon in the next class, and we will continue the lesson and read the another topic of the same lesson.